Welcome back, guys. In this video we are going to look at the solution for the quantitative ability of the question paper. If you have not seen the last video regarding the solution of general awareness of the MGNF 2021 paper, you can go and look at that paper. Now let us start with the solution of this paper. Now question number 26 says, your teacher assigns you 288 pages of reading. If you start reading on Monday and read 48 pages each day, on what day will you complete the assignment? So total pages to be read is what? 288. Now if you read 48 pages in one day, so how many days will it require to read 288 pages? So divide by 48, we will have 144 by 24, it is 72 by 12. So it comes out to be around 6. That is, it will require total 6 days to complete the task. So if you start counting from Monday, we will have Monday, we have Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday. So your work will be finished by Saturday. So correct answer will be what? Correct answer will be D, Saturday. Now moving on to next question. Question number 27. 27 says, you deposit 6,000 in a saving account that earn 4% simple interest per year. How much interest will you earn after 4 years? So it is simply asking about the interest. It's not asking about the amount. So simple interest formula you can simply apply. Simple interest formula is equals to principal into R, that is the rate of interest, into time divided by 100. So you know principal is given, principal is 6,000. We have given the rate R and also we have given the time. Just applying the formula you can get the answer. So if you apply the formula, you will get, let me write it here, you will get 6,000 into 4 divided by 100. So you will get here, cancelling this out, and 60 multiplied by 16, 960. So the correct answer will be 160. Okay, moving on to the next question. So next question is this. Okay, now you can see. Next question is, you have a rectangular garden. हमारे पास एक garden given है, इसका area में given है. So suppose this is the garden. Obviously this is 8 feet and this is 4 feet. Now don't get confused by feet and foot. Those are the same units. Just foot is a singular unit and feet are the plural unit. Now if 3 kg of fertilizer is required per square foot, तो 1 स्क्वायर फुट में हमें 3 kg फर्टिलाइजर चाहिए. तो यहाँ पे टोटल स्क्वायर फुट कितना है? 4 8 से 32. तो वी हैव 32 स्क्वायर फुट. So for 32 square foot, how much we will needing? So it will be simply 32 into 3, that is 96. Correct option will be D, 96. Now moving on to the next question. Your bookstore holding 30% of sale. You select 2 books at the original price of rupees 170 each. What is the price of the 2 books after discount? Okay. So initially the price of the book was 170. Okay, so cost price initially is 170. Simple. Now selling price, the amount which we are paying to take those books is what? 30% less. So how much we are paying? We are paying only 70%. So selling price will be 70% only of the amount. So if we calculate, we will get 119. Now mind it, 119 is the cost of only one book.
So we have been asked about the two books. So 119 into 2, we will have 238. So correct option will be option D. Now moving on to next question number 30. You can see question number 30, it says two number together added to 150 and one number is twice the size of simply by looking at the question and the option you can find out the answer. It says one number is twice the size of other. Now according to the option, only one option contains numbers which are double. For example, 20 and 125 cannot be there, it is wrong. This is also wrong, this is also wrong. Only 50 and 100 matches the second condition, so answer is B. Now moving on to the next question. You place a ladder against a building. If the ladder makes a 65 angle with the ground, what is the measure of the angle that the ladder makes with the building? It is a simple question of a right angled triangle and also property of triangle. If we make a triangle, okay, if we make a triangle, it says 65 degree with the ground, so this angle will be what? 65. You know this angle is 90, so we have to find the angle with the building. So let this be the angle with the building. With the green color I am showing it. So x, let it be x. You know the property of triangle, the sum of all the angles, internal angles, is equals to what? 180 degree. So making an equation there, we can get 65 plus 90 plus x is equals to 180 degree. So from there we can find x, the x come out to be 25 degree. Okay, so the correct option will be what? C, 25 degree. Now moving on to the next question. If the radius of the circle decreases by 8%, the area of the circle. Now in this question we will be requiring some amount of calculation, or if you know the shortcut, so I will teach you the shortcut. Now for example, if area is dependent on two quantity, for example, if area is dependent on two quantity that are A and B, and if A is being increased by what? X%. Let me show with different color. X%, and B is being increased by what? Y%. So percentage change in A, with X% increase in A, small a, and Y% increase in small b, the percentage change in the area can be calculated by a simple formula. The formula is X plus Y plus X into Y divided by 100. Now since X and Y both are in increasing nature, so we have taken positive, but if it is in decreasing nature, we can take it as negative. For example, in this question, the radius is being decreased by 8%. Now what is the area? Area is pi r square. Now pi is a constant, so the area is dependent on r, multiplication of r, that is r and r. So applying this concept, we can find out the percentage change in the area. So it will be equals to let me use a red, yes, minus of 8 plus minus of 8 plus minus of 8 into minus of 8. Let me move it. Now if you look at the 32 question, if the radius of the circle is decreased by 8%, now we can simply use the formula that the change in area, if the change in the side is x, if the change in the side 1 is x%, and the change in side 2
is equals to y percent, then change in the area will be given by the formula x plus y plus x into y divided by 100. Simply use this formula, you can get answer. So let me calculate it. So change in the area will be equals to what? Minus of 8, since it is a decreasing, so we will use minus of 8 plus minus of 8 again, because रेडियस से 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है. क्यों? क्योंकि पाई आर स्क्वायर होता है ना एरिया, पाई आर स्क्वायर होता है, मतलब आर ही हमारे पास 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसलिए एक्स एंड वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो वैल्यू डिक्रीज हो रही है आर में, तो 8%. सो -8 प्लस -8 प्लस ऑफ -8 into -8 now divide by 100. If we calculate it, we will get minus of 16 and plus of 0.64. So it is minus of 15.36. So minus sign indicates that it has been decreasing. So the correct option will be what? B. Correct option will be B, decreasing by 15.36%. Now move on to the next question. We'll have question number 33. Now if you look at the question number 33, it says for a 40-hour work week, the basic pay is 1200. So we can find out for 1 hour. For example, let me start it from here. 40 hours we are getting a basic pay of 1200. So for 1 hour we'll get how much? We'll get a basic pay of rupees 30. Yes or no? Yes. We can get so basic pay for 1 hour's work in a week is 30. Now overtime is paid at 30% over the basic rate. 30% over the basic rate. So what is the basic rate? The basic rate is this. If the basic rate is this and it says 30% over 30% over the basic rate, means we have to calculate 30% and add it to the current basic rate. So 30% of the basic rate is what? It will be 30% divided by 100 into 30. So it will come out to be 9. So 1 hour, let me show it with green. So 1 hour work in what? In overtime. 1 hour work in overtime is equals to what? 30, जो कि हमारा बेसिक पे है, प्लस 30% ओवर द बेसिक पे, जो कि हमारा है 9. So it will be 39. Now if you look at the option, if you look at the question again, in a certain week he has worked overtime and his total earning is 1590. So regular working से इसने 1200 कमा लिए. Let me delete it. Okay. So we will know we have regular earning से इसने 1200 कमा ली. ओके, और ओवर टाइम करके इसने 390 एक्स्ट्रा कमा लिया, तभी तो इसके पास टोटल कितना हुआ? 1590 हुआ. 1590 है ना. सो 300 इसने कितने में कमाएंगे? ओवर टाइम में कमाएंगे. दिस अमाउंट ही हैव अर्नड इन ओवर टाइम. Now we have just calculated the rate of overtime. The rate of overtime was 1 hour of overtime is what? 39, and 390 he has earned. So how many hours he have worked extra? 10 hours. Simply 390 divided by 39. So we will have what? We will have 10. So for 40 hours he will earn 1200, and for 10 hours he will earn 390. So total 50 hours. So correct option will be what? Will be B. Now
Going back to the next question, we will have a tree grows annually by 11% of its height. If its height today is 115 inches, what will be its height in inches 3 years from now? Now, the point to be noted here is this line 11% of its height. मतलब it is basically a concept of compound interest, means the interest is being carried over compounded. So compounded interest का फॉर्मूला सिंपली होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 raised to the power n is the time. So 3 year time period, it's been asked for rate of interest is 11 and the principal amount is 115. So using this formula we can get 115 into 1 plus rate is what 11% upon 100 raised to the power n is what 3, sorry. So calculating it we will get, now yes, this is a bit lengthy question because calculation is tough. You have to calculate it and multiply it. So after calculating we will get the answer 15.79. so answer is 157.3. answer is C. Now moving on to the next question. Ravi is saving coin in a jar so that he can purchase an e-book. He has saved 144 for 1 rupee coin, 54 for 2 rupee coin and 110 of 5 rupee coin. So 104 for 1 rupee coin, 54 for 2 rupee coin and 110 for 5 rupee coin. If we add total we will get how much? 268. So total number of coins are 268. Yes. Now what is the probability that he will pick a 5 rupee coin? Now total number of 5 rupee coins are how much? Total number of 5 rupee coins are there only this much. So getting out a 5 rupee coin, that is 110 out of the total coin. Total coin is how much? 268. Calculating it we will get the answer. We will get what? Dividing okay, yes, it's simple. 55 by 134, which is the third option. So option C is the correct answer. Moving on to question number 36. Pooja is 7 years older than her sister Nisha. Okay, Pooja is 7 years older than her sister Nisha and Nisha is 3 years younger than their brother Anuj. Now the point to be noted here is it has been said their brother, means Pooja and Nisha are sisters and Anuj is their brother. And if the sum of their ages is 64, so simply Pooja plus Nisha plus Anuj is equals to 64. Sum of their ages is 64. Now taking the first condition, Pooja is 7 years older than her sister Nisha. So Nisha plus 7. And the second condition, Nisha is 3 years younger than their brother Anuj. So Anuj minus 3. Now what we can do is we can put this value of Nisha in Pooja's equation. So we will get what? We will get, let me write it with blue only. So we will get Pooja equals to, Nisha की जगह हम a minus 3 रखेंगे तो a minus 3 plus 7. Let me actually plus 7. So it will be Pooja equals to a plus 4. तो सी हमने क्या किया यहाँ पे? हमने क्या किया? हमने निशा की एज भी अनुज के फॉर्म में ले आई और पूजा की एज भी अनुज के फॉर्म में ले आई. ठीक है. अब हम क्या करेंगे, ये निशा और पूजा की एज को हम ये जो इक्वेशन नंबर 1 है यहाँ पे, ये जो सम ऑफ देयर एजेस है, इस पे पुट कर देंगे. सो लेट इट
let us put there. So a plus 4 plus निशा की जगह हम क्या रखेंगे, a minus 3, a minus 3 और प्लस a तो यहाँ पे है ही ऑलरेडी, a equals to 64. Yes, so it is 3a plus 1 equals to 64. So a we get 21 I guess. Yes, so a is 21. मतलब अनुज की एज जो है हमारे पास कितनी आ गई, 21 आ गई. We have got the age of Anuj 21. But the question is being asked about the Nisha. How old is Nisha? So Nisha कितनी है? निशा अनुज से 3 साल की छोटी है. निशा जो है अनुज से 3 साल की छोटी है. 21 से 3 साल पहले 18. So the correct answer is C, 18 years of age. Now moving on to the next question. Question number 37. Yes, you can see it now clearly. Surya uses the 20% off coupon when buying a sweater. The cost Okay, so continuing now. Surya uses a 20% off coupon when buying a sweater that cost 4,799. So the cost price is 4,799. Now 7% sales tax he also pays. So after discount, what will be the price? That is 80% of this. This will be equals to how much? You can calculate it. Getting this and this, 8 9 72. So let me write it here. 2 9 3 3 8 and 3, and point will be here. So 39.2. This is the what? This is the cost of the sweater, selling price. Now हमें 7% टैक्स और देना है, तो 7% इसी पे और देना पड़ेगा ना, तो 7% we have to add. So 7% that is 7 by 100 into 3839.2. So ये कितना आ जाएगा? This will come out to be 268.74. So this is the 7% जो कि हमें और देना है. किस में देना है? जितने के भी हमने परचेजिंग किए, मतलब this plus this plus this. Okay, we have to add it. So adding it, we will get what? We will get the price, the total price that we have to pay. So adding it, we will get option B, 4,107.94. Okay, adding this, we have to add this, we have to add this. Okay, moving on to the next question. Okay, Vijay's tea shop tea cost 3.5 per cup during the week and 4 on weekend. Those who don't know, weekend का मतलब होता है हमारे पास Saturday and Sunday. So weekend is what? Weekend is only Saturday and Sunday. If Anil bought 2 cups of tea every day except Saturday, तो यहाँ पे पॉइंट नोट करने वाली बात यही है, except Saturday. So अगर हम देखें हमारे पास क्या है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे. ओके, जिसमें से मंडे को वो 2 कप ले रहे हैं, ठीक है, 2 कप का चार्ज कितना होगा? 7 रुपीज़. यहाँ पे भी ट्यूसडे को भी 7, फ्राइडे को भी 7, लेकिन सैटरडे को वो नहीं ले रहे हैं, तो सैटरडे को कुछ भी नहीं है हमारे पास. और संडे को वीकेंड है तो 4 रुपये पड़ेगा, 4, तो उस हिसाब से हमारे पास 8 रुपीज़ पड़ रहा है. तो इफ़ वी add all of these, we are getting how much? We are getting 35 plus 43. We are getting 43.
नाउ हमें क्या पूछा गया, एवरेज ऑन हाउ मच डिड ही स्पेंड ऑन ईच कप ऑफ टी दैट वीक। तो ईच कप ऑफ टी, टोटल नंबर ऑफ कप ऑफ टी कितने होंगे यहाँ पे देखो 2 कप ऑफ टी लिया है, लेट मी यूज अनदर कलर पिंक। यहाँ पे हमारे पास 2 कप है, यहाँ पे भी हमारे पास 2 कप है, यहाँ पे भी 2 कप है, 2 कप, यहाँ पे भी 2 कप और यहाँ पे भी 2 कप। तो इनका सम कितना हुआ, तो टोटल मिला के इनका सम हो गया हमारे पास 12। यस, तो 12 के लिए ये पे कर रहे हैं 43। तो 43 ही इज बीइंग पेइंग फॉर हाउ मच, फॉर 12, for 12 cups. So as the average will be equals to what? Average will be equals to 3.58. So 3.58. Option B is the correct answer. Okay. Let us move to the next question. Question number 39. Siddharth average score after 8 test is 91%. मतलब जितना भी सिद्धार्थ ने 8 टेस्ट में स्कोर किया है, डिवाइड बाय 8 करेंगे तो हमें एवरेज मिल जाएगा। तो मतलब जितना भी मान लो सिद्धार्थ ने स्कोर किया है, जो भी सम है, डिवाइड बाय 8 करेंगे तो हमें पास कितना मिलेगा, 91% मिल जाएगा, जो क्वेश्चन में गिवन है। तो हमें सम मिल जाएगा, यहाँ से हमें सम ऑफ द टेस्ट स्कोर फॉर द 8 टेस्ट मिल जाएगा, जो कि कितना है, जो कि हमारे पास 91 into 8। सो दिस विल कम आउट टू बी 728। यस, ओके। तो हमारे पास 728 जो है ये सम मिल गया, किस चीज़ का सम, कि 8 टेस्ट में इसने टोटल मिला के कितने स्कोर किए हैं। नाउ taking to the next part of the question, if he gets 82 on the 9 test, now simply 9 test का एवरेज पूछ रहा है, तो 8 टेस्ट का सम हमें पता है, दैट इज 728, और 9th टेस्ट में हमें कितना मिला है, 82 मिला है। तो टोटल मिला कितने हो गए, डिवाइड बाय 9, अगर एवरेज निकालना हुआ तो दिस विल बी 810 डिवाइड बाय 9, दिस इज इक्वल्स टू 90%। ओके, सो करेक्ट आंसर विल बी B, 90%. Okay, moving on to the next question. What is the 7th number in the series? Series का क्वेश्चन आ गया हमारे पास। The 7th number in the series, you can see from 3 to 6 it is increasing by 3, from 6 to 12 it is increasing by 6, for 12 24 it is increasing by 12. So you can see every number is double of the previous number. Yes or no? Every number is the double of its previous number. For example, see here, this into 2, 3 into the 6, and 6 to the 12. So similarly the next number will be, so for 3, 6 and 12, the next number will be 12 into 2, we will get 24. Now from 24 into 2 we will get 48, 48 into 2 we will get 96. So these are the differences. Okay, so these are the differences, so after 24 what is the difference, 24 के बाद 24 और एडिशन होगा ना, you can see after 24 what is the difference, is 24 again. So 24 plus 24 is equals to what, 48. So next term will be 48. Now 48 plus what is the difference again here, what is the difference here, you can see 48 and the difference here is again 48. So 48 plus 48 equals to 96. Now again from here to next term will be equals to what, again next term will be equals to 96 plus 96 is 192. So the correct option will be 192. Answer is C. Now moving to question number 41. Question number 41 पे जाएंगे हम। तो 5 years ago Vinay was 4 times
एज ओल्ड एज अरूप 5 years ago। तो अगर हम करेंट एज विनय की और अरूप की मान लें V एंड A, ठीक है, तो 5 साल पहले की बात चल रही है, तो 5 साल पहले विनय भी कितना होगा, 5 साल छोटा होगा, -5, और अरूप जो होगा वो भी 5 साल छोटा होगा, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन गिवन है वो 4 टाइम्स है, मतलब विनय वॉज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज अरूप। ओके, सो दिस इज द इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करो और विनय और अरूप के उसमें रिलेशन निकाल लो। नाउ विनय और अरूप के उसमें रिलेशन निकालने के बाद द अरूप इज 15 ईयर ओल्ड नाउ। अब इसमें रिलेशन निकालने की जरूरत भी नहीं है, अरूप की जो एज है वो गिवन है अभी, अरूप इज 15 ईयर ऑफ एज नाउ, तो यहाँ पे 15 डाल दो, तो विनय विल बी इक्वल्स टू व्हाट, विनय -5 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 15 -5। सो सॉल्विंग इट विल गेट 15 -5 ब्रैकेट में है, सो सॉल्विंग इट विल गेट 10 40 and so Vinay -5 equals to 40, so Vinay will be equals to what, sorry 40, and Vinay will be equals to 45, option is A, 45. Okay, let us now move to the next question. Yes, next question. Aisha wants to paint the wall of a room. She knows that each can of paint contains 1 liter. तो एक कैन में 1 लीटर है एंड हाफ लीटर विल कम्प्लीटली कवर 62 स्क्वायर। ओके, तो हाफ लीटर जो कि जो कवर कर सकता है कितना, 62 स्क्वायर फुट। ओके, 62 स्क्वायर फुट को हाफ लीटर कवर कर सकता है। सो 1 लीटर कितना कवर कर लेगा, 124 को, सिंपल है। तो 1 लीटर कितने को कवर करेगा, 124 को, और एक कैन में 1 लीटर ही होता है, मतलब एक कैन इनडायरेक्टली हमारा कितना कर देगा, 124 स्क्वायर फुट कवर कर देगा। बस हमें अब एरिया निकालना है। अब एरिया के लिए हमारे पास नेक्स्ट लाइन गिवन है कि हमारे पास ईच ऑफ द 4 वॉल इज 12 फीट हाई, तो हाइट गिवन है, 2 ऑफ द वॉल्स आर 12 फीट वाइड एंड 2 ऑफ द वॉल्स आर 15। ओके, सो 12 इंटू 12 के हमारे पास कितने हैं, 2 एरिया हैं, एंड 12 इंटू 15 के हमारे पास कितने हैं, 2 एरिया हैं। सो 12 हमारे पास कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। तो 144 जो कि आएगा हमारा वो कि 2 होगा, और यहाँ पे भी 180, yes, it will come out to be 180। 12 5 60, ओके 180, यस, ये भी 2 के हैं, इट इज़ 180। ओके, हाँ, तो हमारे पास एरिया आ गया। हमें टोटल एरिया निकालना है, टोटल एरिया निकाल सकते हैं हम। टोटल एरिया हम निकालने के लिए मैं नीचे स्पेस का यूज़ कर रहा हूँ। टोटल एरिया विल बी व्हाट, 2 इंटू 144 प्लस 180 डिवाइडेड बाय, ये तो टोटल एरिया आ गया। नाउ एक कैन 62 स्क्वायर फीट को क्या करता है, तो इतने एरिया के कितने कैन चाहिए होंगे, डिवाइड कर दो 62 से। ओके, we'll get the answer. The answer is approximately what, let me calculate, 31 and 144 plus this 200, 324, yes, 324, yes, the answer will be 324। Sorry, I made a mistake here. Here it should not be 62. Okay, it should not be 62,
इट शुड बी 124, बिकॉज 1 कैन के लिए हमारे पास 124 है ना, तो 124। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे अगर हम आंसर, देन 2 दिस विल बी 62, ओके 62, and this amount so 324 divided by 62, this comes out to be 5.2 approximately. That means we will require 6 can, ठीक है, so the correct answer is 6। अब 0.2 के लिए 1 कैन लेना ही पड़ेगा, 0.2 हम छोड़ नहीं सकते हैं इसलिए। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन 43, during a sales period announces a sale of 50% discount on the price of all products. This results in an increase in the sale volume by 18%. What is the net effect on the revenue because of the discount? Now looking at the question, we can see, now the easier way is, let us assume that initial rate was 100. Initially item rate was 100. Now after giving a 15% discount, the rate becomes what, 85? Yes, okay, 50% डिस्काउंट देने के बाद 85 का बन गया वो प्रोडक्ट जो कि पहले 100 का मिलता था। नाउ अगर हम मान लें कि पहले 100 रुपये के हिसाब से वो 100 प्रोडक्ट बेचता था, ठीक है, पहले 100 रुपये के हिसाब से वो 100 प्रोडक्ट बेचता था, और अब बोल रहा है क्वेश्चन के हिसाब से कि वॉल्यूम में 18% की इंक्रीमेंट हुई है। मतलब कि अब पहले 100 बेचता था अगर, तो अब 18% का इंक्रीमेंट हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा 118। तो न्यू रेवेन्यू कितना है, सो वी कैन कैलकुलेट इट हेयर। ओल्ड रेवेन्यू वाज हाउ मच, ओल्ड रेवेन्यू इज 10,000 and new revenue is, multiplying it we will get 10,030, ओके 10,030 एक ही साथ है, ठीक है, वो मैंने ऊपर नीचे कर दिया है लिखने के लिए। तो हमें निकालना है क्या, ओवरऑल इफेक्ट निकालना है। मतलब ओवरऑल अगर हम देखें तो ओवरऑल क्या हो रहा है, ओवरऑल तो हमारे पास प्रॉफिट ही मिल रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है, कितने से इंक्रीज हो रहा है, 30 से इंक्रीज हो रहा है, कितने में इंक्रीज हो रहा है, 10,000 में, जो पहले 10,000 था। तो हम परसेंटेज इंक्रीज निकाल सकते हैं, सिंपली 10,030 माइनस 10,000 डिवाइड बाय 10,000, so it will come out to be what, 0.3%, into 100 भी करेंगे, so into 100, so it will come out to be 0.3%। 0.3% हमारे पास आ गया आंसर, लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस नहीं है, so यहाँ पे ऑप्शंस नहीं है हमारे पास। हमारा आंसर 0.3 है बट ऑप्शंस नहीं है हमारे पास, so it will have to be what, ऑब्जेक्टेड, ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन है, तो इसको हम ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 44 इज ऑल्सो ऑब्जेक्शनेबल। अगर हम 44 की बात करें, 44 में हमारे पास जो भी ऑप्शन जो क्वेश्चन में डाटा गिवन है वो ₹00 पर मीटर है। दिस इफ इट इज 00 पर मीटर, सो सारे आंसर तो 0 हो जाने चाहिए थे, इसमें कुछ भी नहीं आता, तो इट इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43 एंड क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 एंड क्वेश्चन नंबर 44, ठीक है, इनको आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं किसमें, अपने ऑब्जेक्शन पोर्टल में। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ इफ A and B, if A is 2, B is this, and A cube plus 3A square B plus 3AB square plus B। नाउ अगर हम इस चीज को केयरफुली देखें, दिस इज व्हाट, A प्लस B का होल क्यूब का फॉर्मूला है ना, A plus B whole cube का formula। Now value of A is given, value of B is given, simply put the value, that is 2 plus 6 का whole cube, it's 8 whole cube, it is 64 and 512, okay, so correct answer is B, 512। Now moving on to the next question, question number 46। this is a simple algebraic question, nothing to be worried about। You can see, first we will solve the bracket portion, so this red portion that I am marking, let me clear the board first,
Okay, now okay, now this red portion, first we will calculate this red portion that is inside the bracket. So it will be 25, uh, it will be 25 plus 5 into 3, that is 35, and plus 36 divided by 4, it is 9. Okay, now you can solve this. So 25 plus 35 is 60 plus 9, 69, so it is 69. सो हमने अभी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया, हमारे पास आ गया 69. ठीक है, हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया, हमारे पास 69 आ गया. नाउ if we see the right hand side, it is simply x square minus 100. So 100 will come in this side, so x square equals to 100 plus 69. So x is square is equals to what? 169. If taking the under root, x will be equals to what? हम अगर अंडर रूट ले लेते हैं, यहाँ पे अंडर रूट ले लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 13. ओके, सिंपली वी विल गेट 13. दैट्स इट. तो करेक्ट ऑप्शन इज 13. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47. सॉरी, नाउ 47 देखें. अगर हम you tossed an unbiased coin 100 times. Each time your coin landed head, that is you receive a head every time you tossed. What is the probability that you get a tail in 101st toss? ये क्वेश्चन सिंपली कंफ्यूजिंग है, क्योंकि दिस इज सिंपली टू क्रिएट कंफ्यूजन, बिकॉज 100 टॉसेस का 101st टॉस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, कोई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये सिंपली प्रोबेबिलिटी का केस है. तो 101st टॉस करेंगे तो उस टाइम पे हमारे पास कितने आउटकम हो सकते हैं? 2 आउटकम हो सकते हैं. कितने में से? 1 में से, क्योंकि हमारे पास क्या चाहिए, हमें किसका टेल का निकालना है, तो 1/2. सिंपली आंसर इज 1/2. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द सम ऑफ द नंबर इज 30 एंड द डिफरेंसेस इज 10. द प्रोडक्ट इज ओके. हम इसको कन्वेंशन तरीके से भी कर सकते हैं कि हाँ, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 30 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 10. इफ वी सॉल्व दिस, we can subtract it, change the sign, this is minus, this is plus, and this is minus, so it will cancel out. It will be 2y equals to 20. So y equals to 10. If y equals to 10, if y is equals to 10, then x will be equals to what? 20. If y is equals to 10 and x equals to 20, so their product will be equals to what? 200. So option is B. Similarly, question number 49 also. 49. The sum of the number is 10 and the ratio of the first to the second is 4. So x plus y equals to 10 and x divided by y, we can have 4. So from here we can see that x comes out to be 4 times of y. X comes out to be 4 times of y. Okay. Now put this x in the first equation that we have formed just now. So put x here. So we will get 4y plus y equals to 10. This is 10. Okay. So 5y equals to 10, so y equals to 2. We have y, value of y. Find their product. So if y is 2, x is what? X is 8. If y is 2, then x is 8, and the product is what? Product is 2 into 8 will be equals to 16. So correct option is B, 16. Okay. Now the last question for this section
Now a number was first increased by 18% and then it was further increased by 27%. मतलब इसमें बोला जा रहा है कि पहले एक नंबर को 18% से इंक्रीज किया एंड देन उसी नंबर को जो नंबर आया 18% इंक्रीज करने के बाद उसको 27% हमने और इंक्रीज कर दिया. तो द इंक्रीज ऑल टुगेदर इज, अगर हम देखें ध्यान से तो इंक्रीज के लिए हम कैसे बताते हैं 1.18. दिस इज द 18% इंक्रीज इन दैट नंबर. Similarly, increase of 27% can be shown as 1.27. Now total हमें कितना, टोटल दोनों को मिला के कितना हमारे पास इंक्रीमेंट मिल रहे हैं. We can multiply, simply multiply it. After multiplying it, we will get the answer, that is 49.86. It will be 1.4986. So you can see the increment, कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है 49.86 का हमारे पास इंक्रीमेंट आ रहा है फाइनली, दोनों को मिला के 18% की वजह से भी और 27% की वजह से भी. सो आंसर इज 49.86 सी. सो विद दिस our section B of the general liability is also over. Section B is also over now. Section B is over. We have seen that question number 43 and 44 are objectionable. So आप इन दोनों क्वेश्चन पे ध्यान रख सकते हैं, इन दोनों क्वेश्चन पे आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं अपने पोर्टल पे, ठीक है, रिस्पेक्टिव पोर्टल पे. एंड ऑल्सो सेक्शन ए का सोल्यूशन पहले से गिवन है, एक सोल्यूशन पहले से गिवन है, एक वीडियो डाल रखी है जिसमें हमने जनरल अवेयरनेस के लिए, जीएस के लिए हमने वीडियो बना रखी है. उसमें भी क्वेश्चन नंबर हमें 2 क्वेश्चन मिले ऐसे जिसमें क्वेश्चन ऑब्जेक्शन कर सकते हैं. दैट वाज क्वेश्चन नंबर exactly I don't know, that was चौरी चौरा क्वेश्चन, द क्वेश्चन रिगार्डिंग द चौरी चौरा ट्रेजेडी एंड द पीटी उषा वाला क्वेश्चन. तो इन 2 क्वेश्चन में भी आप सेक्शन ए में ऑब्जेक्शन कर सकते हैं. ओके, विद दिस आई विल कंक्लूड this video. If you like the explanation, so with this I'll conclude the video. If you like the explanation of this questions and if you want more videos regarding any of the topic in reasoning, you can comment in the comment section below. And if you have any query, any critique, you also can comment on the comment section. And if you want this question paper is available in the link below. You can download from there. Okay, and also hit the like button if you like the video. Thank you.